IVM. आओ दोस्तों, तुम्हें सुनाऊं एक ऐसी कहानी जो कर दे अनहोनी को होनी, जिसमें राजा को मिलती है रानी और बुढ़े को अपनी पॉडकास्ट। ये क्या था? तूने हम दोनों को बुढ़ा बुलाया अब्बास? नहीं, मैं अपने आप को बुढ़ा बुला रहा हूँ। अच्छा। अपना बुढ़े को मिल जाता है अपना पॉडकास्ट। पर ये है क्या, मतलब ये दिस वाज द ओपनिंग कोट फ्रॉम योर फेवरेट फिल्म एंडी, माय फेवरेट फिल्म। मैं ऐसा कभी बोला ही नहीं कि माय फेवरेट फिल्म, which is called दीवाने हुए पागल from 2005, which is the film we are discussing today. And एंडी के पीछे भी टैटू किया हुआ है, दीवाने हुए पागल। मैंने कभी बोला नहीं मेरा फेवरेट फिल्म है। ऐसा ये फिल्म में अच्छे जोक्स हैं। ओके, Still- तुम एलिटिस्ट लोगों को ये पिक्चर अगर पसंद नहीं है, अगर तुमको लगता है ये पिक्चर क्रिंज है, wow, तो मेरी गलती नहीं है वो। first 30 seconds you've declared a class warfare on Has It Aged Well. This is going down, man. I'm just happy that like you know in one conversation I am being called the elite because usually I am on the other side. Pretty I am just aspirational happy. for you, right? Okay. Yeah, that's right. मैं Moving मना भी up नहीं, I am scale. not even going to defend myself कि नहीं क्या बोला रहा था, elitist हूँ मैं हूँ, yes You elitist मैं हूँ, person. मैं वड़ा पाव खाती हूँ 500 रुपए का, that's right, Wow, yes. okay. Without chutney, ना? नहीं, That is चटनियाँ the प्लेट kind- पे that लगी is हुए the- तीन डॉट। Can I introduce you properly? Yeah. After this class war, I think. With me in the studio is my co-host Andy Reghu. Oh, sorry. co-host. No. All right, take Wow. over, man. वाओ अब्बास, Boom, boom in your face, Urjita. Not ठुकरा in के that way, मेरी but yeah. को-होस्टियत देखेगा मेरा इंतकाम। नहीं, इसी के लिए तेरे को हकलना चाहिए। ये सब जो बोल रहा है ना, उसी के लिए। With me in the studio is my co-host Urjita Vani. Yeah. And our guest who's already spoken a lot Really? before we even introduced him is a stand-up comedian, writer and Creative director. Don't creative forget that. director. What else do you do? What else? Roadie? I was a teacher. Teach what? Yeah. Poor kids. Yeah, they were. पैसा नहीं था उनको, देख फीस 10 देने के साल लिए। के बच्चों को सबक सिखाना, उसको टीचर नहीं बुलाते एंडी। आई एम जस्ट सेइंग, Post graduation degree कुत्ते के college. मुंह से रोटी छीनने को टीचर नहीं बुलाते एंडी। He dons many hats. He's the one and only Mr. Andy Reghu. Thank you guys. Yeah, yeah. I thought Tiger Shroff was coming for this podcast. Yeah, he's on his way. Yeah, he'll right. come for the alternate ending segment. That's true. That's true. You are his replacement. Yes. Yes. To stop making these erotic Sorry, sounds. Okay? ASMR. आज हम डिस्कस करेंगे। Anyway. कैसे बनाते हैं वांग्याचं भरीत? We're still on Has It Aged Well. Your podcast app has not malfunctioned. Andy, welcome to Has It Aged Well. Thank you, man. Thank you so much for having me. And it's I a want to pleasure. tell you that we've been wanting to get you for a long time because that's what we tell all our Yeah, guests. really. And Antriksh has been messaging me for 5 times. Hey, are you free on Friday? Okay. And then there's nothing on Friday. Antriksh hosts another show, not this one. नहीं, but वो मेरे को बोला कि why is Antriksh hosting me, man? Like you guys are his good friends. Okay, right? I'll check it with him. He's getting bigger and better guests now, if I may say so. Wow. But then how come Urjita was there on his podcast? Ow, burn! Welcome to the Comedy Central roast of Urjita Vani. Class divide, huh? Deewane Huye Pagal from 2005, starring Akshay Kumar, Suniel Shetty, Paresh Rawal, Rimi Sen, Asrani, so many more people, And a Johnny lot Lever, more people, yes. Suresh सुप्रिया Menon. पिलगांवकर। Shreya Pilgaonkar is in the movie? सुप्रिया Supriya पिलगांवकर। Pilgaonkar, oh sorry, Yeah, I yeah. thought like, okay. But Andy, we wanted to do a comedy film with you. Yeah. Are you checking your texts live on the No, recording? I'm looking at the beginning of the movie, which is like a great beginning. And Oh fuck, I can't. Okay, so How does the movie start? नहीं नहीं, No, movie I पहले wanna देखनी get थी, there. अभी शो के टाइम How does the नहीं। movie start? This is not live reacts. I want to get to that. I want to say that it was difficult for me to get through this movie. मैं हर movie Why? I approach every movie with a very open mind. Okay, Okay, and Rajiv we've done Masand, about I'm sorry. we've done about I made you watch this movie. we've done about 60. I think we're nearing 65 episodes now. Okay, so now suddenly you've developed taste. So for the last 64 episodes, every movie I watched, Yes. even if I didn't like it, I was like, there are positive aspects to this. There's something I can contribute अच्छा, to the तो इसकी conversation. वजह से सोसाइटी में कुछ हो नहीं रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ये कहना चाहते But when I watched दीवाने हुए दीवाना वो पागल, पुदीना, कम से कम मूवी का नाम तो सही ले। जॉनर चेंज कर दिया, खाने के बारे में बोल रहे हैं which apparently is not a sequel to Avara Pagal Deewana, even though the font is the same, the cast is almost the same, Yeah. but it's not a sequel. It kind of is because you know मूवी के बीच में ना वो पहले वाले मूवी में आफ्ताब का एक रेफरेंस आता है बीच में. No? So this movie nuanced observers को पता चलेगा ये मूवी में क्या है. Like Which is why even in the credits आफ्ताब शिवदासानी को special thanks. Special thanks क्योंकि to उसका फोटो आ रहा है, समझा?
was This before movie is so copyrights. 2005. The special appearances are by Vivek Oberoi and Aftab Shivdasani. Okay, that's There's no just special appearance. Vivek Oberoi is the सूत्रधार of The narrator of the film. समथिंग वो कुछ He's राइमिंग not करता the ना. सूत्रधार, he's सूत्रधार. नहीं उसका राइमिंग कुछ है. ये सूत्रधार. What is it? Do you remember? वही ना. मैं बोला फिर। बताऊंगा राणा- आपको राणा- कहानी राजा about को मिल- प्यार को, I am your सूत्रधार. I think I'm assuming ऐसा कुछ था. He's राजा को rhyming- मिली रानी और बुड्ढे को मिला पॉडकास्ट. Oh. But when we reached out to you, we wanted to do a comedy film with you because there's no point doing a serious film with you. Because भाई सीरियस मूवी भी देखता हूँ मैं. सीरियस बातें भी बात कर सकता हूँ. and you suggested दीवाने हुए पागल तू because पहला नाम according ले to ये 1 घंटा इसी में चला जाएगा यार. People like कौन सा मूवी का बात करे तो रिलीज भी नहीं हुआ है. and when I we had a separate group chat with Urjita and me and the producer of this show, and I said that Andy wants to do Deewane Huye Pagal. Then Urjita suggested another movie. I went back to you and you were like, no, I want to do Deewane Huye Pagal. नहीं तूने बोला ये Because देखा. you- एक मिनट you रुक. thought- ग्रुप देख आज का एजेंडा क्या है. मूवी के अलावा बाकी सब डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके आई एम गेम फॉर दिस मैन. No, I want your justification. And you said you love this movie so much. I've seen this movie और उसमें बहुत सारे जोक्स हैं. हर पिक्चर देखी, कोई भी पिक्चर डिस्कस कर लेते. देख But तू then अगर you ये were movie like- नहीं करना चाहता था ना. You could have told me upfront. ये 4 ग्रुप नहीं, बना I के want to do पॉलिटिक्स it. मत कर. I want to do the तेरा movie कोalition नहीं चलेगा अभी. because you said that this So movie. मैंने कहा कि एंडी रोडीज में था. I was right. I was right after all. I was. Just because मैं रेड जैकेट पहना है. Yeah, is this a reference to the something in the movie? नहीं ये जो अगला पॉडकास्ट का जो मूवी आएगा ना उसके लिए. अच्छा, दिस इज okay. लाइक व्हाट इज दैट ईस्टर एग्स. बॉइल्ड एग्स क्या बोलते हैं उसको. वही बोलते हैं ना. Can we start talking about Yeah, this? sure. I know, चलो I'm करो trying यार. to for the last 10 minutes. एक मिनट रुक. You said you like this movie better than the film that it was inspired by, which is There's Something About Mary. That's what it's Okay. supposed to be. पर वो हाँ. एक ही सीन है. बाकी मूवी अलग है. No, there's a, I mean, the basic premise of the movie of एक multiple लड़की के men पीछे- हाँ, वो तो chasing सब one 90s movie. में सब मूवी वही था. एक लड़की के है. पीछे तुम जो पकड़ लो वो उसके पीछे. हाँ. Just everybody. There's Right. बहुत सारा 90s So But Andy, you're like 43 now, right? So No, I'm 45. in 2005, you would have You're been talking about my IQ बढ़ गया, you would have 50 हो been 27, I think. Yeah. So as a 27-year-old, tell me your first podcast में memories. maths मत करा Your यार. first memories of watching Deewane Huye Pagal, and why did you choose this movie? ऐसे ही बट मतलब मैं भी तभी देखा नहीं था. मैं भी 2-3 घंटे पहले ही देखा. नो आई एम किडिंग. मैं लॉकडाउन में देखा था. Really? Yeah. You didn't watch it when it came आई out? वाज नॉट एक्सट्रीमली ऐसा मूवी देखने वाला बच्चा नहीं था मैं. अच्छा, तो क्या I कर was रहे थे? तभी तो बच्चा था भी नहीं ना पर. तभी तो जवान था काफी. हाँ, I was into Okay, Urjita, Yeah, moving on. your first memories of watching Deewane Huye Pagal? या अभी 2 घंटे पहले जो तू ऑटो में बैठ के देखा ना. सॉरी जो एसी कार में तू आई ना उसमें. नहीं मैंने बचपन में देखा है. ठीक है. दीवाने हुए अच्छा, पागल कल ही मैंने ना हुई. काफी बार देखा है दीवानी हुए पागल बचपन में. तो हम भाई बहन मिलके ऐसे टीवी लगाते थे और जो मूवी जी सिनेमा या सोनी मैक्स पे काफ़ी लगता था ये. तो वो हम काफ़ी बार देखते थे. एंड आई रिमेंबर सो मूवी का एज यूजुअल 20 मिनट्स मैंने पहली बार अभी देखा बिकॉज टीवी पे देखा है मूवी तो And इट इज what जरूरी. 20 मेरे को minutes लगता they है वो are. 20 Yeah. मिनट्स वो उड़ा दिया वो लोग ने. वो लोग डायरेक्ट अक्षय Okay, कुमार के honestly, entry I से have movie to चालू I करता have to है. tell you that when like this movie just drops you in the middle of so many things happening. Yeah. Om Puri is a scientist who has a talking parrot. नहीं, best मेरे वो को है. honestly लगा पहले 5 मिनट they're recapping आवारा पागल दीवाना. I was like, if this is a This is sequel. sci-fi comedy because जो तुम लोग तेरे को पता था कि sci-fi comedy है. अभी पता चला. Exactly. But this Because has the Om Puri is greatest a- opening. Om The Puri is greatest a- opening is that there is a song which is called as Chakle Chakle. Have you heard it? चकले, क्या तुम लोग चकले, मूवी चकले. देखा है यार. और नहीं उसमें बात कोई करना मेरे फूड को टेस्टिंग non-expert भी से. नहीं हो रही है. वो and you know have you heard Chakle 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 Chakle. 2 लाइन वही है. Chakle Chakle because I have the lyrics. Not to be confused with Chak De from Tararampam. Exactly. Yeah. Yeah. Which is what I was singing. Yeah. Chak Chakle, de, chakle. chak de sare gum. But back to your chakle. Yeah, exactly. वो है Chakle Chakle Chakle. The Chakle, music is by Chakle, Anu Chakle. Malik, by the way, and I think Anu Malik was the only one doing because नहीं, नहीं. background में भी उसी की आवाज है, गाने भी वो जो है गाने ना, भी उसी की अरे आवाज गाना में. छोड़ कोरियोग्राफी भी उसने किया है. If you look at it, because if you look at अक्षय कुमार कुछ भी कर रहा है. Opening song ना ऐसा शॉट जा रहा है, वैसा शॉट जा रहा है, ऐसा शॉट जा रहा है, Right. and then it turns to another song. There is a song that turn me on. So it's like Chakle Chakle का तो ये जो तू उसको But this is हिंदुस्तानी not the क्लासिकल opening. किया ना. This is not the opening credit song. The opening No, credit opening song. 10 seconds is this song, which again Oh, comes really? back after 15 Okay. minutes as a full-fledged song. Okay. तो So starting, Anu Malik copied himself. in yeah, this he movie. remixed his song which he is remixing. समझा उसमें
ये कोई भी So opening that में I नहीं noticed, yeah. तो That जितने भी ये turned me on. बेस्ट चीज पता है इसमें क्या ओपनिंग में एवरीबॉडी डांसेस द एंटायर कास्ट इज देयर Correct. एक्सेप्ट सुनील शेट्टी तो सुनील शेट्टी का वो लोग एक फुटेज मूवी से निकाला जहाँ पे वो ऐसा चल रहा है बिकॉज ही कांट वॉक Yes, you're right. But even before the movie begins, there's 4 pages worth of UAE officials who they thank in the special thanks Yeah. because they shot, and there isn't that much Dubai even in the movie except for the climax. So I don't know why they Dubai needed है so ना, many. And there is one Chinese name, and then they in bracket write China. So I don't know what that's supposed to mean. That there's so many UAE people, and चाइना then प्रोपेगेंडा बहुत पहले से चल रहा है and then. Please explain the first 15 minutes. Why isn't that the movie? वो जो 15 सेकंड में विवेक ओबेरॉय रिकैप कर रहा है कि ओम पुरी, sorry my phone fell down. That नाइस कैच Om Puri is a scientist See, who's so it who's starts- making a youth serum apparently. Yeah, he's that making a should youth have serum. been The movie, exactly. Yeah. Yeah. Why was that not the movie? That was original. Like, and then they went on to make something. I think out of it. original movie वो था कि विवेक ओबरॉय was supposed to play this guy who saves the world and from the scientist and all and Right. then later on they realized कि you know अपने को That is another movie. That is Prince. they're like ये मूवी हम लोग Yeah. बाद में बनाते हैं फिर Prince then उसका opposite है जिसमें विवेक ओबेरॉय wants to destroy the world. That is Krish 3. was- so starting of the movie is like Om Puri is the scientist वो ऐसा ऐसा करता है and वो फार्मूला लिखता है हाँ. पर वो फार्मूला कुछ और ही है क्लोरोफिल वोरोफिल का फार्मूला है जहाँ पे वो यूथ पे एंड देन देयर इज अ his assistant Which is his son apparently, right? नो ये मूवी में There is a woman who's his Oh, assistant. okay, Yeah, sorry. assistant. पर वो और ये उसमें वॉइस ओवर वही दे रहा है और ये है साइंटिस्ट लाइक ओके एंड उसके लिए नहीं होना साइंटिस्ट इंजेक्शन लेके आता है एंड देन इज लाइक ये है साइंटिस्ट और ये है साइड किक और ये वो ऊपर ये एंड देन द नरेशन इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन और Yeah. फिर बोलता है कि इसका एक इवल ब्रदर भी है ओम पुरी has evil brother Correct. He has a double role. Don't cut to that so quickly. ये साइंटिस्ट है, ओके. नाउ अभी ये साइंटिस्ट क्या काम करता है? ये किस रिसर्च में लगा हुआ है कि इसको जवान करना है. ठीक है, एग्जिस्टिंग Not the Shah Rukh लोगों Khan को movie. जवान करना है. हाँ, Yeah. तो ठीक है, तो उसके लिए अभी वो क्या एग्जांपल देंगे? ऑफ कोर्स लाइक वन रियलिस्टिक थिंग दैट दे शोड इज कि ह्यूमंस के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है उसके पहले वो एनिमल्स पे करते हैं. ठीक ये है, best है. सो देन जवान करना है. ठीक है, उम्र कम कर रही है. ठीक है, सब एवरीबॉडी ऑन बोर्ड. एक बतख लाते. ठीक है, बतख को डालते एक्सपेरिमेंट में. तेरे यू को वुड क्या लगता है? एक्सपेक्ट यू वुड नहीं, एक्सपेक्ट उसको पूछ हाँ, तेरे को There's क्या a duck. लगता है? Okay, Yeah. there's a Duck, bathtub. बड़ा डक है. Yeah. उसने हाँ. पूरा ऐसा नहीं कि वो ये सिरिंज से बतख के ऊपर डाला उसने पूरा बाथटब में डाल दिया सॉल्यूशन जो भी है. क्या होता है हाँ. नेक्स्ट सीन क्या है That इतना बड़ा it's लाइक a- आर्किमिडीज प्रिंसिपल को किसी ने ऐसे यूज किया है. इतना बड़ा बतख है क्या होता है उसके साथ नेक्स्ट that it becomes smaller. नो अंडा बनता है Really? मतलब तू समझ रहा है चिकन फ्राइड राइस डालेगा तो उसमें से राइस निकलेगा. For a second, I thought, is this that movie? It's going to go totally bizarre. And this is going to be the tone of the movie throughout. Yeah. But it's not. Also, Vivek Oberoi is recapping all this while pink hearts are going behind him. He's playing I think they Cupid. wanted to make a different movie. ये 4 मूवी है फिर वो लोग ने बोला एक काम करते यार ये See, अक्षय my सुनील- only problem with the whole movie is Only that problem? I wanted the movie to work. Okay, I wanted. You wanted the movie to work? No, पूरा सुन ले. Me too, पूरा Urjita, सुन ले. me too, yeah. I wanted the movie to work. I wanted it to be funny. But the problem with I don't know if it's just me or other people also. If you feel the same, कि if there is a funny movie, but अगर वो movie में किसी के साथ बुरा हो रहा है और तुम उसके बेसिस पे अगर तुम लाफ्स लाने की कोशिश करो तो फॉर सम रीजन दैट डजंट वर्क फॉर मी लाइक But who are you talking क्या about? That movie is full of that. नो शाहिद किसके कपूर साथ बुरा Oh, शाहिद okay. कपूर के Audience साथ कॉन्स्टेंटली मैं पूछ रहा हूँ So you also agree that it's नहीं a... नहीं नहीं शाहिद कपूर अरे अभी देख वो Wait, skipping ahead. नहीं मैं बोल रहा रुक शाहिद कपूर एक्टर है उसको एक लड़की पसंद है उसको छोड़ के चली जाती है फिर उसके पीछे दुबई जाता है नहीं तो ऑब्वियसली उसका मजाक तो उड़ाना ही चाहिए भाई नहीं दुबई क्यों जाती वेलकम है? अक्षय कुमार एक्चुअल रियल लाइफ वर्जन I have a lot of things to go through. So या लाइक डिप्रेशन the premise is said that he's got a youth serum and for some reason then he gets away with it and the only secret then like now this serum is hidden somewhere and Yeah. the and the and the वो अलग है code- और मेन चीज तो वही भूल गया तो थिंग क्या होता है पता है क्या दिस गाइस मेड द सीरम पर इसका इविल ब्रदर है हाँ. which is again Om Puri. Om Puri Yeah. and that Om Puri has 2 sons Correct. one son is Punjabi हाँ. but the other son is साउथ इंडियन yeah. Malayali. Suresh Yeah. Menon. नहीं Malayali is too much intricate detail Yeah. I know, yeah. Sorry, South Indian. Generic South and Indian. how do you know he's South Indian हर फ्रेम में इडली खा रहा है
हर इडली खा frame रहा है में। उसको मूछ है Yeah. साउथ आयो इंडियन अरे से बात करता आयो है तानिया ऐसा बात करदा है तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रही मेरी अच्छा क्यों अभी तुम नहीं लोगों को बन बहुत हंसी रही आ रहा है. Now it's not nuanced. Now suddenly it's funny. it is not nuanced yes and if that one South Indian stereotype wasn't enough they introduced another South Indian stereotype with Johnny Lever and if that wasn't enough then they introduced a third stereotype later on when Suniel Shetty is revealed to be a bhai who's South Indian. So it's is that why you like this film? Because you as a South Indian yourself, Wow, you feel thought this is represented. giving us representation. Wow. Wow. Yeah. एंड सी माय प्रॉब्लम इज कि ऐसा भी नहीं चल अगर उन्होंने ऐसा बता रहा था कि ये नॉर्थ इंडियन फैमिली में एक साउथ इंडियन बच्चा कैसे पैदा हो गया दैट इन इटसेल्फ इज फनी यू डोंट नीड टू Right. एक्सप्लेन Yeah. बट दे एक्सप्लेन्ड आल्सो कि इसकी मरती हुई माँ बोलना चाह रही थी कि ये 2 नंबरी है दे सेड 2 नंबरी क्योंकि इनके पड़ोसी का भी बेटा हो सकता है ऐसा Right. उन्होंने दे सेट इट इनको अप हमेशा शक हुआ है कि क्या ये इनका बेटा है. वो या वॉइस ओवर में. एग्जैक्टली बट देन यहाँ तक हो गया फिर उसके बाद कट बैक इसमें भी कट हो रहा है इन विच ये फाइनली वो सीरम ले लेता तो उसका भाई बोलता है अब अपन We पैसे have to बनाएंगे. talk about the Tota. हाँ, Tota is तो- essential. so Yeah. think तोता तो है भाई तो तोता इज द मेन थिंग Which is पूरा a- पिक्चर में तोता ही तो It's not even a real. You either It's show a not real even a parrot real. or you'd show a CGI parrot like मैं प्रेम की दीवानी हूँ. No. Well, we'll take a stuffed toy No, from no, Archie's so the gallery. so the thing is now this scientist इसको पता है कि इसका भाई ये चुतिया हाँ, है, इसको हाँ, मारने वाला है. हाँ. तो क्या करता है कि now he has to protect it because he wants to use it. I think he wants to give it to the Indian government. But these guys want to give it to the Chinese government. ऐसा कुछ है. No, he wants to use मैं it for अलग movie देखा himself. क्या? Oh shit, मैं न्यूज़ देख रहा था. Sorry guys, ये क्या हो रहा है? He wants to use it for. He wants to sell it, and his son wants to use it for himself. Yeah. The non-Malayali son. नो उल्टा बोला द No. सन वांट्स टू सेल इट बट Oh, ही वांट्स really? टू द Oh, डैड oh, वांट्स correct. टू No, that there makes is- more there is a sense. Chinese angle to There sell is a it to Chinese Chinese, angle, yes. okay, maybe. Because One the of the thing is, buyers वो are, dad है ना dad the evil brother. Om Puri, yeah. evil ओमपुरी says कि मैं किसी को यूज करने नहीं दूंगा ये सिर्फ मैं जवान बनूंगा. Yeah. But he doesn't have access to it He because doesn't have the access to it. हाँ. the key is with. तो नहीं तो दूसरा ओमपुरी वो क्या करता है कि एक ऐसा छोटा सा गोदरेज का कबर्ड आता है ना पोर्टेबल उसके अंदर वो डाल देता है. Correct. और तोता है ना तोता रहता है उसको नंबर बोलता है 72816 हाँ. एंड द तोता मेमोराइजेस इट. Correct. या और फिर ये दोनों लेके भाग जाता है बिकॉज ही नोस पीपल But they kill the scientist Om Puri, They and kill our the heroine witnesses this. हाँ नहीं ओमपुरी क्या करता है पता है क्या ऐसे बीच में हीरोइन जा रही है गाड़ी रुकता है और तोता डाल देता है उसको. Oh yes. या Fuck तुम यार, कौन लोग हो? हाँ. तोते के बारे में सी मेन हीरो कौन है पिक्चर में. तोता. एग्जैक्टली ये तुम लोग समझ नहीं आया. दिस इज मुझे आई शुडंट से दिस बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गई ये Oh, फिल्म. right. यू थॉट इट्स अ कॉमेडी मूवी नो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. Okay. इट्स अगर तोता से पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे ना मूवी Hmm. इट्स अ मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग. Okay. या तोता से सब एक्सपेक्ट करे कि एस्ट्रोलॉजी करेगा मुझे मेरा नहीं फ्यूचर ऐसा कुछ भी बताएगा नहीं है. यू कांट डू इट. छोड़ दे. हाँ बट एनीवे कंटिन्यू. So then we're introduced to our main player. Yes. Shahid Kapoor wearing braces is this nerdy guy in college who has a crush on Rimi Sen's character. I forgot her name. Whatever. her name तानिया is. Tanya. नताशा होता है उसका नाम. पहले तानिया फिर नताशा होता है Tanya. तू चुप बैठी है तूने देखी नहीं मूवी अच्छे And से Tanya, he thinks Tanya is too cool for me. She will never, she'll never notice me. But then he realizes, no, she does notice me, and he wants to pursue her. But while he's planning things, ये सब हो जाता है, मर्डर वो देख लेती है, तो अब तानिया को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है because otherwise the evil ओमपुरी gangster will get behind him. And Shahid Kapoor is working for Johnny Lever, who is another South Indian stereotype. And how does he find out that she's escaped to Dubai? Someone tells them. वो इन द कैफे जो भी लड़की आती है ना हाँ. शाहिद कपूर उसको जाके पूछता है कि कहाँ गई है. तो Very फॉर्चुनेटली sane, very sane एक thing to जन do. बोलता है कि वो दुबई चले गए अच्छा. एंड इज कन्विंस्ड लाइक ओके दुबई चले गए हाँ. क्योंकि इसके जस्ट पहले कोई बोलता है दिल्ली चली गई पर उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो इज लाइक हाँ दुबई जरूर गई होगी. That would be more believable for him. दैट इज मोर totally. बिलीवेबल. Yeah, yeah. दिल्ली चली गई तो फिर ये मतलब एक दिन में ढूंढ लेगा ना पिक्चर कैसे बनेगा रे दुबई में सेट है बाकी सब एक्टर दुबई में आके बैठे हैं एक थोड़ी हाँ, दिल्ली इतने जाके सारे ऑफिशियल्स को थैंक यू भी हाँ, बोल दिया thank you भी starting बोल में. दिया. But then John Lever says he knows somebody who can confirm if she is in Dubai or Yes. not. Then we have the entry song for Akshay Kumar. चकले 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 आजा मेरे And बाबा. his entry is he lifts up a woman Yeah, on a वो table. नाच में बोला ना अन्नू मलिक ने कोरियोग्राफी भी किया बिकॉज दे लाइक भाई बजट इतना ही है अपना तो तेरे को गाना भी बनाना है लिरिक्स भी करना है और कोरियोग्राफी भी करना है. हाँ. बजट खत्म हो गया दुबई जाने में. Hey, I want to rewind a little bit. I want to know your guys' opinion on Vivek Oberoi in general. I forgot to ask. In I general, really liked him back then. Okay. I thought he back was the then, yeah wow, yeah it's yeah. like you were in a relationship. They really back then. Now he's like changed. He's toxic and all, man.
एंडी तू बात करने देगा को-होस्ट इस पॉडकास्ट की, प्लीज जरा मर्यादा रखिए. Whoa, Urjita's getting a dose of her own medicine today, guys. Yeah, माइक को हाथ मत लगाना, कुछ भी होएगा. Sorry, yes, Urjita. But yeah, what is this unnecessary shading, Abbas? एक तो विवेक ओबरॉय, I think he was the ultimate chocolate boy back then, and he was so charming. I loved him in क्यों हो गया ना. मैंने वो मूवी इतनी बार देखी है just for him. Like Aishwarya Rai was also that. This is the first time that मैं ऐश्वर्या को छोड़ के किसी और को देख रही हूँ. If she is there, like otherwise if she is there in a movie, you have to look at her. You can't look at anyone else. But I really loved him, man. I don't know why he just fizzled out. And the thing is, we know why he fizzled out. I mean, I'm saying my point is that ऐसा नहीं कि वो chocolate boy roles ही किया. Shoot out at लोखंड वाले में क्या kill किया उसने. Also like Dumb. People always forget Dumb. Which one? Dumb. Oh. Yeah. I don't think I've seen that movie. अरे I remember the वो song. सब जान जिम में में. वही गाना लगता है. Yeah. अभी भी? हाँ. क्या? क्यों मैं पुराने जिम में जाता हूँ ना, that's why I'm like. But yeah, I'm sorry, Urjita. So you had a crush on him, but he didn't live up to the standard. Your expectation. Yeah. I mean, but like. Wow. Andy, for you, did I you also like had a crush on Vivek him. Did he live up to your expectations? नहीं, वो साथिया में सही था उसके बाद. But then Krish 3 was like his last major role, right? Yeah. Where he said he took inspiration from Heath Ledger's Joker. Yeah. After that, I mean, he did, of course, the Prime Minister biopic, but then after that, there wasn't much that we saw him in. Yeah. Would you like him to make a comeback? I'm thinking एक कोई तो movie थी जिसमें वो आया था, but I don't remember Prince? which. वो Prince तो was बहुत पहले, back then. I think I would like. I think honestly I would like for him to make a comeback, but the problem is फिर वो क्या role play करेगा, because Streaming show में आ सकता है. I mean, because there's a lot of. अरे आया था streaming में some police Inside officer Edge. he played. Was he in Inside Edge? Yeah, he was there in Yeah, Inside Edge. yeah. And he also played a police officer in some other MX Player show. Okay. So Why don't you call him on this podcast? I've reached out to him. He's on his way. Tiger के साथ आ रहा है वो. दोनों साथ में आने वाले हैं. dude, तेरे को ऐसा placeholder I लिया. genuinely believed you when you said कि वो आ रहा है. Tiger Shroff? No. You have called him. You have reached out to him. I was Yeah, like, we have. Yeah. Maitri is Your nodding. dreams will come true, girl. It will happen. Okay, I was always cold on. I liked him in Satya though. I think Yeah, Satya is Satya. really good. But I don't know. I think his success went to his head. So that's why. His success went to somebody else's head. True. Not Yeah, him. yeah. So surprisingly, so I wasn't very impressed on this movie by this movie, but I was watching this on YouTube, and it has 48 million hits on YouTube. So obviously there's a lot of people watching this, and if you go through the comments, right? I'm talking about, we're talking about Akshay's introductory song. There's a very peculiar fandom of Akshay Kumar playing harami roles in movies, right? Which is what he was known for in this during this era. Okay, and then he sort of made the transition to good-natured and patriotic and all of that. So this is like quintessential harami Akshay Kumar, where he's given the job to go find out the character, and he himself falls in love with her. Yeah. And so you like Akshay Kumar in this movie? You think you see yourself when you watch Akshay? मैं तो दुबई नहीं जाऊंगा भाई किसको ऐसे नहीं, but उसका इंट्रोडक्शन सीन बहुत सही है, in which it's supposed to be a club, Right. पर क्लब के अंदर there's a wrestling ring, Right. और वो रिंग के अंदर now there's a strip pole, and guess who's dancing on it? Akshay Kumar. This is like don't let them know your next move. It is that. क्योंकि पहले there's some I'm assuming Eastern European women to be politically correct. They're dancing and they're dancing. I guess like they're supposed You've to already dance. made like 3 Malayali jokes. That Yeah, train has but not gone. Eastern Malabari coast Malayali. ये वैसा वाला एटीट्यूड हो गया ना कि अपने देश में चलता है बट उसके हाँ, बाहर बाहर गाँव हाँ नहीं बाहर दिखानी, लोगों के हाँ. बारे में भाई सुन ओके हाँ तो then he opening में वो as you said the opening He lifts a woman twice और at the यहाँ पे beginning भी of है the... और साइड में नाच भी रहा है लड़की ऊपर है and she's like मेरा क्या रोल है, he's like shut up and be there upliftment no but anyway तो ये कर रहा है and he's dancing and then बीच में he does his move and all ये वो सब क्या सब रिंग में अकेला so he's only guy, उसको से एक बनियान और जीन्स दिया and बीच में you can make out की जगह नहीं है क्योंकि they have fit so many women in it that he's like अरे हट ना यार डांस तो करने दे चटले लिरिक्स भी yeah basically I feel this is one of those movies जिसमें अक्षय कुमार को स्क्रिप्ट मिली नहीं थी, उसको बस बोला था आप जाके वाइब करो सर, आप वाइब करो, कैमरा चालू वाइब और बीच में there's one move in which there's one girl तो he's surrounded by all girls ना तो छापड़ मार रहा है उसको लड़के and she's on the ring actually नहीं मारा तो ऐसा फिर Why is this your favorite film again, Andy?
I क्योंकि guess ये it's because of the तोता. And then he's on the pole. तो पोल में ऐसा दो लड़की साइड में, वो पोल में और वो पोल में ऐसा खड़ा है और टॉप एंगल लिया. And he's like, what do I do? And he's made to slide down. Correct. It's Akshay Kumar porn. No, Yeah. it's a good script. I think Malcolm Lessons. Oh, okay. Yeah. That one joke is funny where after the song they're distributing money and he says ek tera, do tera, do mera, and he keeps two stacks to काफी himself. मीम्ड जोक भी है Yeah, वो yeah, यार. yeah. ये क्या तुमको पॉपुलर जोक पसंद आ रहे हैं अब्बास? Popular jokes. अंडररेटेड चीजों के बादशाह अब्बास को पॉपुलर चीजें वो पसंद आ funny रही है है. यार, वो सीन बहुत funny है मतलब. That seems funny, yeah. और उसका एक मीम बना था कि that is how HR distributes you salary. Akshay goes to Dubai, finds this woman. Yeah, Akshay goes to Dubai. Now, That's right. explain something to me. She's a model in Dubai. No, the thing is, यहाँ She's से वो a भाग गई, singer, वहाँ से singer. जाके- She's a singer. She's going to launch Yeah, yeah. herself, her album. her album. Okay. So she's famous. she's famous over there as. But she's undercover. she's As undercover. Natasha. As She's changed her name. Because But if यहाँ से लोगों से भाग रही है ना. but Dubai में आधे Indians Pakistanis तो हैं. नहीं, but Somebody नहीं will नाम identify- चेंज किया तो नाम फिर चेंज किया यार. बट एक्चुअली डाउट सही है तेरा भी, क्योंकि एक तो ऐसा भी नहीं नाम चेंज करके अंडर कवर है, नहीं उसमें भी उसको ऐसा करियर चुनना है जिसमें उसका हर शक्ल हर जगह रहेगा. Yes. वो फेडेक्स के ट्रक्स पे भी उसका शक्ल है. That is how Shahid Kapoor. Yeah, that is how Finds her, Shahid yeah, Kapoor yeah. finds her. But that's later. So इसके बाद ये सॉन्ग के बाद I think then these guys meet them. तो उसके correct. बाद So we'll come to each of them individually. But I want to talk about Rimi Sen. She also had a moment in the early 2000s where it seemed Yeah. like yeah, I she was think going to be the 2000, next. 2006 she was there in almost every Priyadarshan movie or something. Priyadarshan comedy movie she yeah. was She had there. this weird niche where she was the hot girl in the comedy genre. Yeah. Hangama also, I think she's Yeah, the heroine. Hangama This also one. was Heera there. Fairy 2 में है क्या? नहीं. Hera Fairy 2, हेरा I think फेरी she is. 2 में दे. Yes, You're right. हेरा फेरी And then 2. she also वही ना disappeared. 500 रुपए का नोट लेके. Yeah. Correct. That is That. We could have done Hera Fairy 2, but we stuck. yeah. She was there, I'll Deewane tell you. Pagal. Okay. Name 5 Rimi Sen movies. Go. Hera Fairy 2. Hangama, one. Next. Hangama. Deewane Huye Pagal. Was she in Dhol? No, Dhol is Tanushri Datta. Come on. Very, very popular Rimi Sen movies. Come on, you can do Really? it. You have 5? Yeah. Priyadarshan movie. That one, Garam Masala. No. Yeah, Garam Masala. Garam yeah, Masala sorry, and Mala Mal Weekly. yes. No, Malamal Vicky, she's not there. She's not What's there. the movie with all of them? Halchal? No. Okay, I give up. I don't know. तेरे को नहीं याद है? अरे गोलमाल में है. Oh, really? Oh, yeah. Yeah. Yes. उसका गोलमाल, she is like known for गोलमाल. काफी Okay. मतलब उसमें काफी I really like Rimi Sen यार. I think like the problem is that उसको comic timing उसका दिखाने का कहीं मिला. She was there in so many comedy Correct, movies, yeah, but like yeah. she never cracked a joke. Correct. Like and I feel like because ऐसा नहीं है कि वो मूवी में ऐसे जैकलीन फर्नांडिस टाइप ऐसे फ्लिमजी रोल्स कर रही थी. ऐसा नहीं था उसका. Oh, Jacqueline Fernandez doing. Yeah. Like in Name comedy one movies. strong character that Jacqueline has done. Uh, Exactly my point, yeah. Yeah. इसको क्या लगा? तुझे क्या लगा? हाँ? तुझे क्या लगा? I'll fumble. हाँ? Huh? हाँ? Don't stutter. Yeah. But I don't no, know what's happening. But Rimi Sen, I feel उसका personality I think काफी strong दिखाई देता था movies में. It's just that because like comedy movie है तो कमी jokes सारे दूसरे actors के उसका एक भी joke Yeah. नहीं है. But she was part of big ensemble cause यहाँ पे 20 actor लोग हैं. No, see, now I'll give you an example. चुप चुप के उसमें ऐसा तुम्हें लगेगा कि बाकी सब एक्टर्स के जोक्स है, बाकी फीमेल अपने एक्ट्रेसेस को कोई जोक नहीं. नेहा धूपिया had a lot of jokes in चुप के. Correct, but she wasn't the lead. She wasn't the Yeah. lead, but that's what I'm saying. It was possible. Correct. Like Rimi Sen तो lead थी ना. Yeah. तो वो भी काफी उसका भी पर्सनैलिटी वैसा हो सकता था. Like maybe something like bad example, but Asin from Ready. Okay. Something like that. True. I also felt Aisha Takya had a good comic timing. There's this film that I think only I've seen, De Tali. I've seen it. Yeah, De yeah, Tali, yeah. she's funny. She has a couple of funny lines. Yeah. But again, she was not given the opportunity to be funny in these films. Yeah. She was also funny in Full and Final. Okay. Another Yeah. film which starring Shahid Kapoor. Yeah, another film starring Shahid Kapoor, another comedy film starring Shahid Kapoor in which Shahid he's Kapoor not is being funny. He's playing the straight guy. So there's this whole thing, right? That Shahid was pissed that his role was cut down In Deewane Huye Pagal because Akshay took most of the prominence in the film. Not the first time Shahid is complaining about his role being cut. Oh, which other film did he complain about? Padmavat.
Oh, really? Yeah. Oh, okay. I did not know this. Anyway, we have to go into a break. When we come back, we'll try and decipher the rest of the movie. And I have some So trivia. far we have deciphered 15 like the minutes first of the 30. movie. हाँ guys, इस पिक्चर में सुनील शेट्टी है, परेश रावल है, असरानी है, तोता है, तोता will make a comeback. Yeah. So we'll talk about all of that and more on the other side of this break. If you are watching us on YouTube, please subscribe to the channel, press the like button and the bell icon, and check out the other shows on this network as well. But not right now. Right now we're going to a break and we'll come back right after this. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Divya Datta. She shares the intriguing stories that have shaped her life and career. From her not completely being on board with doing Bhag Milka Bhag, starring Farhan Akhtar, to breaking the set because of her excitement of seeing Shah Rukh Khan. On Pop Talks, Snehil and Antariksha are joined by the dynamic Amit Saad. They delve into his passion for adventure sports, his incredible life journey, and his love for football. With candid insights into working with Salman Khan, Amit also shares an interesting story from behind the scenes of Sultan. Folks, if you like our show, spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsor this week, Omidyar Network India, SBI Life, IDFC First Bank, and Save Life Foundation. Thank you for making this possible. And we're back on Has It Aged Well with Urjita Vani, and a big fan of Deewane Huye Pagal, Andy Reghu. It's a good movie. Okay, I will entertain that thought. So let's get to the other people in this movie. So Akshay falls in love with Rimi Sen. And Akshay falls in love with everybody. Basically. everybody falls in love with Akshay Kumar. So he lies to the Shahid character. He says कि उसके बच्चे हो गए हैं. नहीं, the starting हम लोग जहाँ पे छोड़े थे ना, वहाँ पे there's a joke in which he comes. अभी ऐसे मैं करूँगा पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर. नहीं, he comes and says कि we have to ये लड़की को ये करना है. So they just say that. क्या करना है? तू clearly बोल थोड़ा. ये podcast है, clearly बोल, सुनाई. ये movie का script है भाई. तो script था. How guys? Oh, future filmmakers, I see. Wow, guys. Okay. But the jokes, Akshay Kumar has all the setup lines, बाकी सब actors का है. Punchline इसके पास. If you look at all the scenes, most of the scenes, then probably second line सब Suniel Shetty के पास है. And then Paresh Rawal का. Yeah, Paresh Rawal is. I don't get why he was in this film, because he's not doing his Paresh Rawal thing. Couple of times he does. The running joke is, of course, that his name is Tommy and the dog's name is something very Pawan Lal or something. I came to this conclusion after watching Paresh Rawal in this movie. I think Paresh Rawal is one of those guys jiska I love to see him only in roles where he is playing the authority figure, or he has some power, like Hera Fairy, Hangama. Like in this movie he didn't have any power. Correct. And plus he was playing this helpless dude, so I didn't like him at all. 90s का lot of movies में ना, early 90s में all, he also used to play the villain. Yeah, of course. And I liked him so much. Even the Judwa, Judai. हाँ, वो question mark वाला ना. Yeah. But there again, his scenes stand out from the rest of the movie. That's because what. it's almost in isolation. Yeah. इसमें his dance stands out. वो एक क्लब में जाके डांस करते देखा. हाँ, वो. Yeah, because this movie अगर तू देखेगा नहीं, in isolation, it's all a collection of memes. उसका जो भी जितना भी ये हुआ. But back then there were no memes, right? No, it's only in retrospect. The culture, मतलब the foundation stone for meme culture. वो तुम लोग को समझ तभी में नहीं आ रहा MMS थे ना, तो. I don't know what kind of MMS memes are happening now. But guys, video messages, MMS means that, okay, never forget. Yeah, but the thing is, अभी जो meme culture आया है, उसका foundation stones these guys did. Correct. वो अपने को समझ में नहीं आ रहा है. You're just checking at the surface level कि ये movie अच्छा है, बुरा है, and you're passing your elitist comments on this shit. बराबर है. हम surface level की बात कर रहे हैं, of course. और That's memes. a lot of English for today. Give me the non-elitist take on this movie. Apart Non-elitist take दिया ना इसने, मजा आया. That was his take. So the other person, of course, interested in the in Rimi Sen is everybody else is Suniel Shetty, and who in most of the film plays this very over the top disabled person. Who's what is over the top disabled person? What Suniel Shetty is playing in this. So I have a point. Okay, remember that scene जब भी book नीचे गिर जाते हैं और उसको उठानी होती है. I have a point. तो सुनील शेट्टी की शक्ल ने आज तक जितनी एक्टिंग की नहीं है, उतना उस सीन में उसकी बॉडी ने कर दी थी. Just like so many, मैं इतना हंस रही थी. I was like, this is wrong. I shouldn't be laughing at this.
But it You're was right. very funny. What have you got against Suniel Shetty? Let's discuss No, that. we have thing KL against against horrible representation of disabled people. First, Yeah. I mean, there are a lot of disability jokes in this movie which have not aged well. Like the word Langda Lula is thrown around very Yeah, liberally in yeah. this movie. The person Langda Lola is also thrown around very Yeah, yeah, yeah. mercilessly. So yeah, what is Suniel Shetty doing? So I mean, these people. This came out in 2005. Hera Pheri came out in 2001, I think. Yeah. In these 4 years, like, why isn't the chemistry of these three people working here? Sunil Shetty, Paresh Rawal, नहीं, and Akshay chemistry is Kumar. working perfectly. I think वो scenes इतना नहीं है. क्या नहीं है? Scenes written together Correct, इतना नहीं है. yeah. Because Yeah. हेरा फेरी में क्या 3 main character है. Right. यहाँ पे there are It also has Om Puri playing a loud character, there's a right? parallel it's story running in correct. which like people have देखिए कैसे हुआ कि ये लोग तीनों का सब सीन एकदम फुट रहा है, मजा आ रहा है, पर बाकी देर लाइक भाई एक स्टोरी भी चल रहा है, ये स्केच कॉमेडी नहीं हो रहा है. Yeah. वहाँ पे तुम लोग को थोड़ा ये हो रहा है. So Vikram Bhatt directed this film. Do you know when in the early stages of the film, David Dhawan was supposed to was in the talks to वो direct it. इंट्रो वो किया था क्या? No, I think had David Dhawan directed it, it would have been a much better film. Yeah. Because we discussed Partner a couple of weeks, I think last week with Kunal Rao, and Partner is like Godfather level in front of this, because I'm like, at least that film has like it has Godfather level तो yeah ज़्यादा हो dude गया यार, इस पिक्चर ये- के सामने totally Partner is way better than दीवाने में पागल. हाँ उसमें लीनियर स्टोरी लाइन था एंड Linear उसमें कोई storyline लूप होल्स नहीं थे. It has proper क्या beats where कॉमेडी शो में तुम लोग को ये सब लीनियर नॉन लीनियर है यार, टेंशन इतना जोक आ रहा है उसमें, हजार जोक. बोल tell me your top 3 jokes of this film. So one, Top I'll 3 tell you joke. mine. I'll tell you top 3 जोक क्या हाँ. है. वो पूरा सीन है ना जहाँ पे Which scene? अक्षय कुमार फाइट्स विद Fuck, दोस्त. I thought you were going to say the dog scene, and I was like, no. ये कोई और मूवी देखा होगा तो. तो So the dog scene. Sorry, go ahead. That's a something direct about lift from वो There's Something direct- About Me. हाँ Yeah. बट the टेल रिमी सेन को वो बचाता है गुंडों से. वो पूरा सीन स्टार्ट टू एंड वो सब फनी है. जहाँ पे बोलता है ना कि Akshay saves him. हाउ डिड यू नो अबाउट दैट. तो बोलता है टाइम मैगजीन. बोलता नहीं आपके बैग में छपा है आर्किटेक्ट इतना बड़ा. एंड देन उसमें Oxford Dictionary. हाँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. पर उसका सबसे जो सीन एंड होता है ना, मेरे को वो पसंद है. आई डोंट नो व्हाई, पर वो सीन में वो बोलता है ना थैंक्स आप बाद में मिलते हैं. फिर वो बोलता है सॉफ्ट हैंड्स और उसके हाथ से वॉच चोरी कर लेते हैं. आई एम लाइक ये तो कर सकते हैं एज इन पिक्चर में कर सकते हैं. देयर इज अनदर मूवी जिसमें अक्षय कुमार अपनी हाथ की सफाई दिखा रहा है. डू यू वांट टू गेस? आंखें. नो. Is this also a meme reference? नो दिस वाज नॉट अ मीम बट ये Okay. था वो मूवी में था वो हाथ की सफाई एज इन हाथ की सफाई मतलब वो ऐसे चुराता था टॉयलेट चीजें. एक प्रेम कथा. हाँ नहीं Toilet. नहीं ये सब 90s का ही कोई मूवी. खिलाड़ी विलाड़ी है नहीं नहीं नॉट 90s बट दिस इज अ कॉमेडी फिल्म ओनली. हाथ की सफाई. या I don't ओके know. अनदर क्लू. राउडी राठौड़ है उसने ये चीजें अपने बाप से सीखी थी. हु इज आल्सो वेरी रिनाउंड एक्टर बट उसका कैमियो है डैड का इन द मूवी. अगेन दिस आल्सो ensemble cast. Tell. Yes. Wow. This is Houseful, the one in which John Abraham is there. Houseful. Yes, Houseful 3, I think. Okay, I just discovered that my producer likes houseful movies. So तो जजमेंट पास कर रहा उधर बैठ हाँ के. कर रहा हूँ. Yeah. बट वो किसी ने पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो व्हेन व्हाइल दे वर एक्टिंग एंड ऑल दे ऑलवेज यूज्ड टू चेक देयर पर्सन ऑल बिकॉज़ ये कुछ भी गायब कर देता था. एज इन ही यूज्ड टू गिव वो इट तेरी बैक. बात कर रहे थे. नहीं Oh, I did. Actually, nah, I just realized Andy and Akshay Kumar in this movie have a lot have in common. something in common. Yeah. No, right. Both play. I mean, he was playing a harami, and wow guys, wow, suddenly no, we really respect all our guests, bro. No, but let me finish my Yeah, sentence. yeah. Oh, sorry. Andy and Akshay, they have a lot in common. Like Akshay in this movie is good at managing things. वो Right. इधर उधर सब manage Yeah, करता है. yeah. Andy is also good at managing things and people. I'll give you an example. Yeah. अगर किसी comedy show में FNB मिल रहा होगा, ठीक है? Fuck this shit. नहीं. Yeah, this is not. ये मुझे नहीं बोलना बताने भाई. दो, ये I'm यहाँ पे मुझे नहीं बोलना. interested. बताने दो. अगर किसी शो में कॉमेडी शो में FNB मिल रहा हो, ठीक है, तो यूजुअली क्या करेंगे? सब लोग अपने अपने हिस्से का ले लेंगे. एंड इज लाइक नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस. वो ऐसे मेन्यू ऐसे खोलेगा नहीं और सबसे एक्सपेंसिव चीजें ऐसे एक्सेल शीट सबसे में डालेगा. expensive चीजें नहीं है वो भाई. बोलेगा उर्जिता तू स्टार्टर मंगाएगी, सुनील शेट्टी तू ये मंगाएगा, अब्बास तू ये मंगाएगा. ऐसा करके वो पूरा ऐसे 7 कोर्स Course मील meal. मंगाता एक है. मिनट अब मैं बताता हूँ तेरे को क्या है. व्हाट इज द
physics behind this Right. chemistry. I agree. I mean, क्या there's है a lot कि of lot of time जब भी आप जाते हो You could have just said maths, but you were like, no, physics behind this physics. chemistry. yeah. अरे ओ अब बतख का अंडा बनाने वाला है। समझा अंडा से आप You order duck, So, you order omelette. Yeah. फॉर एग्जाम्पल 4 लोग 5 लोग गए एक शो करने के लिए जिसमें से उर्जिता भी है, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं पर तुम्हें F&B मिल रहा है, मतलब खाना और ड्रिंक विंक। Yeah. अब ड्रिंक तो मैं करता नहीं हूँ तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Yeah. खाने का क्या चीज़ है, अभी कोई आके बोलता है कि मैं फ्रेंच फ्राइज मंगाऊंगा, तो फिर बेंचो इतना अच्छा होटल में आके शो करके चूतिया ऐसा फ्रेंच फ्राई क्यों खा रहे हैं? तो फ्रेंच उसके नाक में घुसड़ता है एंड नहीं मैं बोल रहा हूँ लॉजिकली फ्रेंच फ्राई तो कहीं person पे भी wants to have French fries. कहीं पे भी तो 50 रुपए का फ्रेंच फ्राई खा सकते हैं। ओके, अगर तेरे को 5 स्टार रेस्टोरेंट में बुलाया है शो करने के लिए तो तू क्यों फ्रेंच फ्राई खा रहा है? Yeah. और तेरे पास कूपन भी है। अब चूतिया से 4 लोगों ने फ्रेंच फ्राई खाया, उसमें से आधा वेस्ट होने वाला या नाचोस, वो नहीं करना चाहिए। द वे टू डू इट इज यू लुक एट द मेन्यू, ऐसे क्या क्या चीज़ है जो ये गरीबों ने खाए नहीं है तो देना चाहिए कि नहीं उनको। तो देन व्हाट डू, देन यू टेक द मेन्यू। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे पे आता है। Right. सो देन यू आर लाइक ठीक है आज मटन खाएंगे, सबको मटन खाना है, डन। फिर उसके बाद चिकन, फिर उसके बाद बटर गार्लिक प्रॉन्स, फिर उसके बाद लॉबस्टर। You have them memorized. एंड द थिंग इज कभी कभी क्या होता है ना कि एंडी ऐसे ऐसी चीजें मंगाता है कि ऑयस्टर लाइए और वेटर कहते हैं ऑयस्टर नहीं है आज, तालाब में तो दिखा था। तो ऐसे द थिंग इज ही हैज ये थोड़ा और एग्जैजरेशन हो गया। ये मूवी का स्क्रिप्ट राइटर भी ऐसा जोक नहीं लिखेगा, इतना और एग्जैजरेशन नहीं करेगा। But I'm तालाब में दिखा but रहा I'm saying कि Andy doesn't. द्वारका में शो कर रहे थे क्या हम My लोग? point is Andy doesn't back down. वेटर Correct. कितना भी Yeah, डिस्करेज करेगा, yeah. एंडी बोलेगा भाई ने बोला लाने का तो लाने का। ऐसा नहीं है भाई, देख क्या है, देख वो लॉबस्टर का बोला कि सर, मैं बोला कि लॉबस्टर है, ही सेड है, तो ही सेड कैन यू गेट लॉबस्टर, ही इज लाइक सर दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा। तो लाइक हमारे पास बहुत टाइम है, आप लेकर आओ। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ जिंदगी में Assume कर टेस्ट लिया। किया। मैं नॉनवेज खाना भी एंडी की वजह से सीखी थी। Really? कि उसने बोला कि भाई ने लॉबस्टर मंगाया तू खाएगी चुपचाप। अरे उस दिन खाने के बाद बाकी का तू वो जो पार्सल लेके गई थी उसका क्या? आप क्या अभी तू मेरे ऊपर ये सब इल्जाम लगा रही है? Can we get back to Deewane Huye Yes. Pagal? Yeah, exactly. Yeah. I like this one joke where Akshay says कि आपने ब्लैक पिक्चर देखी है। मैंने अपना सारा व्हाइट का मनी ब्लैक में लगा दिया है। Yeah. That was funny. वो सब है। फिर उसमें फेरारी और वो पूरा सीन जो है ना उसमें भी वो है कि इसने अपना सर फोड़ा, इसने पैर तोड़ा, तूने By the way, the बांधा फोड़ा। black joke is in reference to Asrani, who's playing a blind guy. What is Asrani again in this movie? Is he a secret agent? No, I also don't remember. he's like future But में he's meme there. बनने के लिए आया था वो। कि अच्छा हुआ मैं He also has one funny line when during the climax when everything is happening in the desert. He says के बाप रे क्या क्या गंदी चीजें हो रही हैं, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, मैं नहीं देख वही तो सकता. वो तो meme- And my favorite was Johnny Lever at one point says everything is war when love is fair. I mean, if that is not funny, I don't know. You guys need to get off your high horses. That is all that I found funny in this You movie. guys need Andy. to get off your high horses because it's never a great idea to switch horses midstream. I don't know what it means, but Yeah. I just want to Why say. are they in a तो मैं stream? so you're trying तालाब to say में कि तुम oyster में एक घूम रहा था. But now I have to keep that oyster joke, otherwise people will not get this. पहली बात तो इतने सारे फनी डायलॉग्स थे। आई रिमेम्बर डब स्मैश करके एक आता था, हाँ, of course. डब स्मैश, उस पे आधे से 50% उसके जो डायलॉग्स थे लाइक कस्टम डायलॉग्स वो ये मूवी के थे। Really? या Okay. लाइक वो वाला आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, Dictionary, yes, एक्सक्यूज मी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने क्या सुना? आई एम सॉरी आई हर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी। तो उसका मैंने भी डब स्मैश बनाया था। इफ आई फाइंड इट वी कैन प्ले इट हियर। Didn't Yeah. Dub Smash then become Musically, which then became TikTok? Yes. Right. Yes. Okay. So you were there early. या You were an early influencer. Yeah. Then what happened? Then I The made my account influence private. The whole exchange between Taj Mahal किसने बनाया, Yes. that is also funny. या कि आपने क्या बनाया? ताजमहल। ताजमहल तूने बनाया? शाहजहां तो कह रहा था उसने बनाया। किधर है? And then he said किधर this है? something like that. Yeah, Yeah. हाँ, तो then हर एक चीज जस्ट लाइक ताजमहल, अरे नहीं रे, उसके बाजू का बिल्डिंग ओबरॉय हॉट। That is also funny in which Yeah. वो दुबई जाता है and then शाहिद कपूर finally meets अक्षय कुमार Hmm. and then वो बोलता है ना कि
तानिया मिल गई? इज लाइक हाँ मिल गई. देन शी इज लाइक अब क्या कैसी है वो? कैसी है वो मतलब अभी 3 शादी के बाद तो अच्छी होगी. वो 3 शादी हो गई. बोलता है हाँ. Just exaggeration करते रहता है, तो बोलता है- hoping that Shahid Kapoor would back down. ट्रिपल विधवा हो गई वो. Yeah, triple शेजवान फ्राइड राइस जैसा ट्रिपल विधवा. तलाक तक ठीक है भाई. Yeah. ट्रिपल विधवा इज लाइक हाँ, और ये हो गया. So the thing is that is where I was like, उसमें वो मीम है देखो, रोने वाला जो मीम है ना, वो वहाँ से. हाँ, तो the thing is after that you would expect Shahid Kapoor चला जाएगा, but then Shahid Kapoor is like नहीं, तानिया को अभी तो मेरी जरूरत है. I'm like कितना क्यूट है यार ये. This is supposed to be a comedy film. Why am I feeling sorry for Shahid? तो अगर ऐसा लड़का है तो बनना ही चाहिए उसका, गाँव मारनी चाहिए, उसके ऊपर जोक होना ही चाहिए. That's why there's this fucking 2-hour movie. समझा? Andy Anyway, and I, guys, we moving on. clearly come from different schools of thought. No, but he also makes a CBSE में था मैं. मैं भी था. पर SSC board guys. our paths diverged clearly, Andy. But he makes a fat shaming joke also, right? कि कैसी है वो भी, से फैल गई है थोड़ी, and something like. नहीं वो ऐसा कुछ बोलता है. He says कि Where is the feminism now, हाँ Urjita? Who says फैल गई है? शायद says. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार तो बोल ही नहीं रही उसको फेमिनिस्ट में. तुम क्या बोल रहे हो? फैल गई नहीं बोलता है वो क्या बोलता है कि 32 किलोमीटर चौड़ी हो गया, ऐसा कुछ बोलता है. नहीं, तो 132 किलोमीटर ही तो वैसा उसमें वो सब जोक्स, वो तो स्टार्टिंग में चलता है. वो नहीं, वो स्टार्टिंग में भी ऐसा जोक्स है इन विच वो आके बोलता है ना कि तानिया को ढूंढना है, तो वो बोलता है कि तानिया को ढूंढना ऐसे ढूंढूंगा, कौन है भाई है क्या, बर्तन लेके भाग गई. वैसा सब जोक है स्टार्टिंग में. Yeah. Time for him, time is equal to distance into mass, not matter. तो There's also Sachin's wife. I'm forgetting her name. Supriya Pirgaonkar. Supriya Don't call her Pirgaonkar, Sachin's wife. I know. I'm sorry. She's Wow, a यार, very established. ये फेमिनिज्म का बात करा बोल रहा है. There is also Sachin's wife. क्या यार ये? Who's an established Supriya actor Pirgaonkar. in her own right. And Wow. Supriya Pirgaonkar, she has such brilliant comic timing. I think Yes, इस movie से ज़्यादा उनका comic timing आवारा पागल दीवाना में था, where she played Paresh Rawal's wife. Okay. So the Yeah. cast is almost identical Yeah. between the two movies, but still this is not a sequel. Supriya Pirgaonkar is also very funny in the show Tu Tu Main Main. She was great. And yeah. and the thing is the thing is in her plays, no, जितने भी उन्होंने plays किए Yeah. वो इतने ज़्यादा funny थे. So I feel like she, and in her personality in general is so like lively. Right, yeah. Like I remember मराठी में भी एक show आता था एकापेक्षा एक करके, which was judged by Sachin Pirgaonkar, her husband. But isn't that conflict of interest? What? If she's participating and She's he's not judging. participating, Baba. But she had like Oh, okay. like done a guest appearance bunch of times to promote her movies. मेरे So को then- लगा she is performing and her husband is judging. No. 10 on 10 every time. No. But her sense of humor is too good. Too Right. good. And she doesn't get to do much in this movie. She plays the Yeah. mother. But she No, has not mother. I think elder sister. Something like. There's that one No, thing. aunt. Sorry, she's playing her aunt, Yeah, because and Paresh Rawal Akshay is Kumar the- calls her elder sister, and she Correct. blushes. कि अरे Yeah. नहीं मैं तो aunt हूँ. She has a nice comic timing in the movie. See, whatever she gets to do, she does well. There's that Yeah. one thing where Akshay slips something into the drink and she Yeah. gets hyper. That's the only time she gets to be comedic. Yeah. Otherwise, she's pretty good. Yeah. Don't agree, Andy? तू सोचा कि क्या ये लोग इतना minute इसमें जा रहे या हैं? मतलब मेरे को तो मजा आया है. अक्षय कुमार के बारे में करो ना बातें क्या बात. होगी कितनी बात करूँ हो गया ना. बट मेनली इफ यू लुक एट मूवी पूरा इट्स लाइक दैट्स व्हाई फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या हो रहा है समझ रहे वो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है बट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट एंड यू आर लाइक जस्ट दीस गैग्स यू Then it comes back in the end, right? एंड में Yeah. आता है. Yeah. Yeah. Where the तो वो तोता तरीका- comes back. हाँ सो वही है ना द थिंग इज उसमें भी वो सीन है ना जहाँ पे बोलता है लड़की को ढूंढना नताशा का फोटो है क्या तो बोलता है फोटो नहीं है वो तोता रखता है तो बोलता है तुम लोग का भी अजीब प्यार है यार क्या तोता के साथ मैं क्या करूँगा अभी तो दैट गैग इज आई मीन वैसे बोलता है Don't try to do this like it was planted and then it was brought back in the end. Okay, I have a It's an doubt. arc. Okay. अगर so जैसे ये हमने काफी पहले भी डिस्कस किया था दूसरे एपिसोड्स में कि 90s अर्ली 2000s के मूवीज ऐसे बनाते थे ना अज्यूमिंग कि पहले 15 मिनट जो है ऑडियंस ऐसे भी लेट आएगी थिएटर में तो इसलिए पहले 15 मिनट में तुम But कुछ भी दिखाओ. if in this they it come wouldn't- late, they miss like huge chunks of information. That's what. So पर ये ये मूवी मूवी में ऐसा में मेरे को नहीं लगता कोई भी कंप्लेन किया होगा कि मैं 15 मिनट मिस किया इधर लोग कंप्लेन कर यार मैं 15 मिनट क्यों देख लिया ऐसा हो सकता है nobody's complaining about it Wait, are you on the side of the movie? I'm or on the not? side of the movie I'm just saying कि तुम लोग का जजमेंट थोड़ा
ये हमारे साथ हेरा फेरी कर रहा है. I know, yeah. नहीं तो इवन द एंड लास्ट वाला सीन क्लाइमैक्स जब भी हो रहा है, जब भी वो सब गुंडे वुंडे आ जाते हैं, लाइक कैन वी टॉक अबाउट दैट होल एक्सचेंज वेयर रिमी सेन इज वॉकिंग एंड देन एक हाथ में वो अक्षय कुमार तोता लेके जा रहा है एंड देन हाँ कान में वो तोता उसका नंबर वो बोलता है एंड देन ही इज लाइक ये नंबर इसके सर में फीड है, तो अगर तुम्हें दम अगर है तो इसको मार के दिखा. हाँ. We didn't talk the son, the non-North Indian son turns on his father. Where he's like, and then there's Suresh Menon also who wants to marry Rimi Sen. Everybody wants to do that. There's something about Rimi. Everybody loves Natasha. ऐसा कुछ they would ऐसा बना लेता तो. They didn't do the most famous gag from There's Something About Mary though, the semen in the hair. Yeah. नहीं वो तो. You know about this, Urjita? No. Urjita is rubbing her eyes. Sleepy already. I'm not sleepy. Have you seen this meme of Cameron Diaz with like with spiky hair? No. Okay, so there's a gag in the movie released in 99. 99, correct. So this is 6 years later. I don't remember the context of this because I saw it very long ago, but somehow she gets cum in her hair. No, the thing is, wow, what movie are you watching? There's something about me. कैसा बोल रहे तू भाई? दे ये मतलब जैसा बोल रहा है वो गलत है. मैं इसने कुछ ये एक साइड में 10 सेकंड का ही देखा है and फिर इसका काम हो गया because he's more like a 15-second guy. But what I'm saying is that so there is this class prom which is happening जिसमें Ben Stiller is supposed to take out Cameron Diaz, okay? And then वो ready होता है तो उसका zipper. Ben Stiller is playing Shahid Kapoor. Okay. Nobody can play Shahid Kapoor. कोई लड़की को ढूंढने दुबई नहीं जाता है. Even if she's gone to Dubai or maybe you were at the balls, huh? Yeah, Michigan, wherever she goes. But भाई अब्बास क्या है यार? So वो zipper उसका अटक जाता है. सब गलत जा रहा है उसके साथ. Zipper अटक जाता नहीं. Explain the whole thing. मेरे को नहीं पता भाई. His balls get stuck in the zipper. Yeah. इतना डिटेल तो मेरे को याद नहीं. I just know some uncomfortable things happen. Anyway, continue. So in his version, balls अटक जाता है and then उसके सर पे कम है. Wow, अब्बास, aren't you the storyteller? Fill the blanks. Aren't you the storyteller? So then what happens? So then what happens is that then he has to get ready and all. तो वो आई थिंक इसके घर पे जाके बाथरूम में अटक जाता है. उसके घर पे बाथरूम में देन ही सपोज टू गो फॉर द प्रॉम. तो बाल सेट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता. तो वो हाँ he jokes off. He's too tensed. So he does what? So how does the semen get into her hair? No. So the thing is when he is not expecting her to come home because he came at home. No, I'm kidding. मुझे जानना ही नहीं है मूवी के बारे में कुछ. Exactly, and that's why everything I know about this movie I learnt against my will. इस एपिसोड में लोग हमको ये दीवाने हुए पागल के लिए भी गाली देंगे, समथिंग अबाउट मेरी के लिए भी गाली देंगे. तुम लोग ने वो भी दोनों मूवी नहीं देखा ना. Guess what? I'll be standing with them. दोनों मूवी नहीं देखी. So then उसके हाथ में या कहीं पे तो रहता, बोलता है ये क्या है. So then Ben Stiller says कि अरे ये तो हेयर जेल है. This is like oh cool, anyway I needed hair gel for the prom. तो वो ऐसे लग के चली जाती है. फिर after half an hour वो ऐसे ही रहता है उसका बाल. Yes, now I remember. And there's that famous scene where someone comes on the door and then she what? opens On the door also? ये कौन सा मूवी है भाई? What comes at the door, arrives at the door. Oh, just by changing the words. Okay, two things I want to discuss, then we can close this episode. Is Shahid Kapoor good in this film? Acting wise. Yeah. What else? Dance wise. His character is very good, but very dumb. Exactly. Very nice, but that's what like nice है, but फिर भी dumb है तो क्या करे. Like at this time he was doing stuff like Ishq Vishk and then that the other film which he did. इसमें charismatic तो बिल्कुल भी नहीं था वो. विवाह तो बहुत बार. फिदा also I think came 2007. He was doing these chocolate boy roles. Connection ऐसा कुछ था. नहीं वो तो बहुत ही बाद में, वो तो लंबे बाल होने के बाद आया. He did Ishq Vishk. He did one more like this college romance type film. I'm forgetting which one, but there was also a pretty decent film. And then he gets to do this where he's playing this nerdy type character. That doesn't do anything in the film. I mean, I don't know how much of his role was cut out. But then in the end, she chooses him. पर अगर होगा तो भी कितना ही रोल होगा. मतलब if you look at it, it was like him and उसका कुछ कॉमेडी सीन्स तो ज्यादा है नहीं ना. So yeah, when you think of दीवाने हुए पागल, you only remember Akshay Kumar. Exactly. Akshay Kumar, Suniel Shetty, Paresh Rawal भी इतना नहीं. But there's also that guy who used to mimic Dilip Kumar who somehow comes in the climax. वो भी है. The thing is, ये लोग सब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है कि ये है इसका साउथ इंडियन बेटा, पर साउथ इंडियन बेटा के साथ दिलीप कुमार भी ऐसा +1 बन गया है. एंड ये लाइक भाई ये कौन सा बेटा है, ये समझ में नहीं आ रहा है.
Yeah. There's this very funny thing when during the climax. By the way, the climax goes on for a very long time because I think they put a lot of budget there to shoot in the desert. हाँ परमिशन नहीं दुबई गवर्नमेंट ने बोला डेजर्ट का इतना शॉट दिखाओ, चाहिए 15 tourism मिनट चाहिए. There's that scene where in the end Rimi Sen is standing and then all the men she's interested in come and start together. And then at one point you can clearly say उनको बोला कि तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है बोलो because at one point सुरेश मैंने से जल्दी चलो केरला जाने के. पर इसका ये मूवी का मतलब क्लोजिंग जोक भी अक्षय कुमार का ही है. What is the closing joke? The closing joke is that everybody is crying that she is going because ये शाहिद के साथ जाती है. Correct, yeah. जो रियल लाइफ We didn't talk about Aftab Shift this funny No, guys. wait, ना closing joke. क्लोजिंग जोक उसका हुआ है कि everybody is like यार नताशा चली गई, तान्या चली गई, सब लोग रो रहे हैं. अक्षय कुमार लाइक खुश रहो, अच्छे रहो. एंड देन उसका जो उसके साथ the guy who's there वो भी बहुत विजय राज. Oh yeah, we didn't talk विजय about राज it at all. जो भी विजय राज has all punchlines. Yeah. उसका जो भी जोक्स है ना कि ऐसा But also he's been so much funnier in other movies. Yeah, that's Yeah. what. तो But फिर what's the वो joke, तो हाँ? विजय राज उसको बोलता है कि यार आप क्यों नहीं रो रहे, लोग सब रो रहे हैं. तो बोलता है रो के क्या फायदा यार, जो होना है वो होगा ही. एंड देन यू थिंक मूवी यहाँ पे क्लोज हो रहा है. फिर वो बोलता है कि पता चला है वो हनीमून में कहाँ जा रही है, चलो इसका पीछे लगते हैं. और वहाँ पे मूवी कट होता है. Yeah, I don't think he's even going to stop there. Like if Rimi Sen और उसका शाहिद का शादी को 2 साल होता है, पता चला इसका बच्चा कौन सा नर्सरी में जा रहा है, he will continue. I don't think he'll stop. And she compared you with Akshay earlier in the show. भाई कुछ भी एक होटल में मैंने क्या ऑर्डर किया, मेरे को एक बार लॉबस्टर क्या खिलाया मैं जिंदगी में, उसके लिए तू मुझे दोषी ठहरा रही है. शुड बी थैंकिंग मी, नहीं तो वही चिप्स खाते रहता था. Okay, I have one philosophical question which Wow, I thought we'll मत have पूछ. exactly, I thought we'll have a serious discussion, but now I'm having Socrates second and an thoughts. Andy. Should we save that for a better guest? No, tell. Wow, Abbas. वाह यार उर्जिता के बारे में ऐसे मत बोलते. No, I wanted to ask, can a copy of something be better than the original thing? Yeah. And Yeah. adaptation has a lot of times been better than the original stuff. Whatever you want to call it, inspiration. Adaptation वो थोड़ा ये होता है कि आपने officially rights लेके किया है, ठीक है? तो वो ठीक है, Like but for example, Devdi was a good movie. You think was it was it better than Devdas? Original Devdas? Original से नहीं, पर उसका जो second third adaptation. So in Devdi it's different because he's taken from all the adaptations that happened, right? But I'm talking specifically like this, they didn't take any rights for their something about Mary. They just pretty much took it as नहीं, is. the thing is अगर if the creators or makers of something about Mary आज ये पिक्चर कंपेयर करता है, उनको पता भी नहीं चलेगा. Yeah. तो But the dog series literally is वो frame बोले to कि frame. कम है ही नहीं, किधर है ये अपना मूवी कैसे हुआ. That's actually true. By the way, the maker, so that movie was made by this directing duo called the Farrelly brothers. Oh, उनमें से also एक confused as Abbas Masta. वहाँ का उनमें कपड़ा से पहनते क्या वहाँ पे वो लोग. वो काला पहनता है. Peter Farrelly then went on to make serious movies. He made Green Book, which won the Best Picture Oscar. ओ ये मूवी देखने के बाद ही सीरियस बनाया But रहेगा कि अब करके दिखाओ कॉपी. Vikram Bhatt not so much. Horror movie भी चला गया. 1920. Yeah. Anyway, So what was the philosophical question again? can the copy be better than the original? Yeah. I can't think of any immediate examples, but it can. Which is why like कि मैंने I think इसके पहले भी बोला था एक बार, I really want filmmakers to remake bad movies. Like हाँ वो हो सकता है. तुम उसको और हिम्मत उसको है और तो भी खराब बनाना चाहिए. That's a great idea. Man. That's no. Okay. Okay. I'll think about it. I'm very exhausted. I just want to wrap up this episode and go home. I had high expectations, but Yeah. और तेरे को ये मूवी देखना it's ही been नहीं है. fun. Let's go to the categories. So, Andy, no, I'll start with you, Urjita. What's aged the best and what's aged the worst in Deewane Huye Pagal? man, what's aged the best? I think Shahid Kapoor's innocence. Really? Because now he does very uninnocent roles. He plays gangsters and I don't like this masculine. Shahid I know, right? at all. Yeah. But no, I think his innocence, just the way he says, नहीं तान्या को मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए. Man, that's ये just. वहीं पे फ्लोर हो गई बोली कि I कहाँ found हैं that. ऐसे मर्द? I found that too cute, man. तो एक तो वो I think it यही has. डायलॉग के लिए ना और 3 घंटा उसके ऊपर जोक्स होना चाहिए था, मालूम है क्या? अक्षय कुमार could have done it. So नहीं, I think that has aged the best. Okay. Other than that, I can't think of anything. I think the Oxford Dictionary joke has aged the best, and the whole conversation between the three of them about about Akshay Kumar's career, that has aged the best. Okay. But what has aged the worst? I think just the whole plot. Okay. Yeah. Andy? सब जोक्स मस्त है.
except अभी जो बोला like there is some jokes about disability. but other than that all the gags in which these three people are there. But I mean, I'm just If saying you look that at it as a collection there of were gags. funnier movies from this same time Yeah. period with the same cast. Yeah. Right? तो राइटर का भी कुछ होता है ना, मतलब दिस प्रूव्स दैट इट्स नॉट ऑलवेज द एक्टर हु इज फनी, इट्स राइटर. Sure, so that's what I'm saying. So from the context of Hazard Age, well, then the other films have aged much better than this one. You would agree with that, right? Probably. So then why did you make me watch Deewane Huye Pagal? Well, I wanted to pull you down from my high horses. समझा Yeah, इसके लिए. you waged a class war right at the beginning Yeah. of this movie. Somebody You has think I didn't like this movie because I'm an elitist? No, you're an elitist irrespective of that. Okay, fair enough. I'm not going to argue with that. Exactly. For And me, Urjita, so you are according to changed. you, nothing has aged the worst in this movie. Everything has aged well. नहीं तो वो जो Disability वाले jokes jokes. और Okay, ये cool, जो fair enough. fat Apart from that, jokes, you apart from like the gags still work. Cool. बाकी तो see the thing is it looks from what perspective are you watching the movie. And like for example एक टाइम में मैं भी तेरे से बहुत चिढ़िया था तो मूवी को ऐसा ओवर एनालाइज करता था एक टाइम पे guys. फिर क्या हुआ फिर मैंने तेरी life लॉबस्टर में? खा लिया एंड ना नहीं वैसा नहीं है the thing is नहीं, it's okay. क्या If you समझना like है the कि movie, I'm movie not. हाँ. किस I mean, दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं दृष्टिकोण, fuck off. नहीं from what point of view are you watching movie तुम तूने movie कौन What से is the point point of से view? देखी? हाँ. तुम किस लिए मूवी देख रहे हो मैं अगर सिर्फ मूवी नहीं, मैं enjoyment के लिए हंसने के लिए मूवी देखा. मेरे को नहीं आई हंसी. Except for मेरे those को- 3 places. हाँ देन Yeah. प्रॉब्ली थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा नहीं मेरे को गैग्स देख के पसंद आते बिकॉज मेरे को जो स्मॉल गैग्स इफ इट मेक्स अ मूवी लार्जर प्लॉट लाइन वो सब मैं नहीं सोचता हूँ Right. बिकॉज भले ही मैं फिल्म राइटिंग वो जो किया है Oh. हाँ show off. या एग्जैक्टली और मैंने पढ़ाया भी छोटा है. छोटा चीज डायरेक्ट किया है हाँ. पर वो सब मैं किया We're not क्योंकि talking about your पैसा sex चाहिए tape, bro. था. Yeah, that is Always taking the low hanging fruit, Abbas. yeah, that's what It's happened in still the sex funnier tape than the too, jokes but in this anyway. movie. That's what happened in the sex tape too. But anyway, guys, we'll not talk about it. All right, we gotta cut this shit. No, this stays. Anyway, for me, what's aged the best? Is you. ये जॉनी लीवर वाला लाइन जो था जिसने भी लिखा है. I will repeat the line. The plane वाला line. Everything is war when love is fair. I think it's a very funny line. Everything else has aged the worst. अरे नहीं यार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सब कितना You funny है didn't even like that Johnny Lever dialogue कि अरे जल्दी कर प्लेन में वरना खड़ा ही रहना पड़ेगा. No, sorry. If you had to program a double feature with Deewane Huye Pagal. I think हेरा फेरी. Really? Yeah. Okay. Wouldn't the shortcomings be highlighted more if you showed? इसलिए तो दो एक ही टाइम पे दो बुरी चीजें क्यों देखनी. But I always thought movies it's a great collection of gags जो भी Sure. I mean, Yeah, of see, course. you are entitled to your opinion. I'm not going to like. and I stand by it just because two people are trying to So what would be your double feature? क्या है डबल फीचर पहले वो बेसिकली इस पिक्चर के साथ एक कंपेनियन फिल्म तुझे अगर दिखानी हो थिएटर में प्रोग्राम करनी हो तो तू कौन सी दिखाएगा बैक टू एंडी बोलेगा पहली बात तो 6 घंटा बैठेगा नहीं मैं थिएटर में. ऐसा नहीं मैं यही 2 बार देखी बैक. आई न्यू यू वर गोना से दैट. why not huh take that you classist Abbas and newly classist Urjita lobster खाने के बाद I would program this one something about Mary with Oh, Deewane Huye okay. Pagal. Yeah, I was like देखो this featuring come is yeah, we didn't talk about Aftab Shiv this time. So he turns up at the end out of nowhere and he's like he's the perfect guy you should get married to, but then she still dumps him. क्या लगा तेरे को वो देख के I mean Does Aftab Shiv if right now I'm like, okay, I've got a boy for you, Urjita. Yeah. I got who a boy think- for you who I think is the perfect guy you should get married to. Would you marry Aftab Shiv? I won't this trust time? you. Andy, would you marry Aftab Shiv this time? नहीं भाई मैं पता है मेरे को कौन सा रोल मैं आई लाइक एक स्पेसिफिक रोल Would you marry Tiger Shroff? I'll You'll think about think it. about it. Okay, cool. but Nice. Akshay Kumar well there's no doubt Even to 2023 Akshay Kumar? no it's not just अभी का it's a series of Right. experiences Okay. I don't know. नहीं पर ये रोल में सही था लाइक अक्षय कुमार एकदम नेचुरल यार अरे अक्षय कुमार Again, को I कोई feel कुछ like नहीं बोल रहा है. he did this same thing better in Hera Pheri 2, where he's playing the Kamina Harami type role, Yeah. but then he's so much funnier in that movie. Anyway, हाँ double feature हो गया. So cool. We'll बट do एक the क्वेश्चन है कि तेरे को इसका शाहिद का रोल इतना क्यों पसंद आया उसमें
Troll नहीं, मुझे just the मासूमियत character, पसंद है no उसकी। character and literally the character of Shahid. You're saying the character he's playing in this movie and his Yeah. actual character in life at that time were the same. नहीं, वो मूवी में उसका नाम क्या है? मूवी में उसका नाम क्या है? पता forgot. नहीं. उसका नाम मूवी में चल राज होगा, जो सपोज वाओ, इतना पसंद आया कि नाम ही नहीं पसंद है. मुझे नाम ऐसे याद Exactly. नहीं रहते. So वो उसके कैरेक्टर का कैरेक्टर बहुत सही लगा. अच्छा, कैरेक्टर बहुत सही था. वाओ, फिल्म राइटिंग 101. तेरे को तो सिखाना चाहिए भाई. मैं बोल रहा हूँ तू critic. No, fair enough. Let's get to the scale. So this is the Hazard Age Well scale, Andy. उसमें क्या करना है? 1 to 10 पे हम Oh, लोग I रेट thought you were करते हैं gonna पिक्चर. spank me with it. हाँ, तो क्या लगा? I thought you were gonna spank me with that skill, but Keep your fantasies to yourself. You can imagine Akshay ये spanking जो you. डीरेल हुआ है गंदी तरह से ये एपिसोड. See, once we came to come in here, then there was no going back. Okay. I just said spanking and just see the fucking mic fell down. Dude, just censor my face and say कोई और आया है उर्जिता की रिप्लेसमेंट. On a Hazard Age Well scale, Andy, 1 being के lowest score, it was a product of its time. You didn't like anything. 10 being अरे हर बार देखता हूँ मेरे को कुछ नया मजा आता है. On a scale of 1 to 10, how much would you rate 7, 8. दीवाने हुए पागल? एक चूज कर, 7 या 8. Oh, 6.69. तो कम कर दिया तूने. 7.69. What is with the ये क्या 6.9? You wanted Why me to you be suddenly? specific? No, I didn't want it to be नहीं, और specific. इतनी तारीफ करके मूवी की ये क्या है? Because I'm under pressure now, यार. तुम लोग का जो ये है ना, ऐसा नहीं, don't get influenced. You defended the movie quite Yeah. well so far. 8 o'clock बोल रहा हूँ. 8 o'clock नहीं अभी. 6:30 बजे. Urjita, for you on a scale of 1 to 10? 5. 5. Okay. Would you rewatch it? No. I would rewatch it. Of course, you watching it twice for the double तू feature. जबरदस्ती दिखाएगा भी लोगों को पकड़ के. Okay, guys, for me, I'm gonna do this for the first time in the history of this show. Wow, क्या करने वाला है? I think I'm Zero? just gonna Zero? give it a 0. I don't think anything from this movie has aged well. निकालो इसको निकालो. कौन तेरे को ये अथॉरिटी दे दिया? I think there are Wow. funnier films with the same sort of premise and with the same cast. I think they've done much funnier films. We've covered some of them on this show. 0? But 0. I didn't like anything. Oh from my this movie. god. गाने भी नहीं अच्छे हैं कुछ ऐसे, like there's nothing in this movie where I'm like Wow. I like this. I'm sorry. It's just sorry, Andy. But yeah, I thought you were my friend. I am your friend, but our cinematic taste. And this after he pushed you to rate it higher. No, but he's like 7 or 8, and then you were like 6.69. You wanted to make a 69 joke, I get it. What is but, 69 joke? Oh really? समझ में ही नहीं आ रहा था. Yeah. हाँ, exactly. मुझे भी नहीं wasn't समझ में आया कि I'm apparent at making all. that joke. Yeah, sure. It's But just- yeah, those were our Hazard Age Well ratings, and we'll do the alternate ending segment while Andy wraps up his laughter. Oh, इसमें right करनी now. alternate ending. Alright, so this is the alternate ending segment where we think of another ending to the way the movie ended, or we pitch a sequel to the movie. So we are discussing Deewane Huye Pagal this year. No, this episode it felt like This a year. अरे अपने आप को टीवी प्रोड्यूसर समझ गया क्या? So in the movie, Rimi Sen ends up choosing Shahid Kapoor, who's like the most innocent and bhola of all the characters. But if you had to think of another ending, Andy, or if you had to do a sequel to this movie, इसका the what thing would you is do? she should have chosen अक्षय कुमार. Why? और फिर उसका अलग ही मूवी बनना चाहिए. बस मैं बोल रहा हूँ, बस वो मजा आएगा. नहीं, आई एम सेइंग कि इसके बाद she should have ran away to another country. Okay. अमेरिका भाग जाने का था. और ये सब With Akshay Kumar. नहीं हाँ. with her aunt. Oh, she हाँ, doesn't choose हाँ, anybody. और शाहिद कपूर को हकाल देना चाहिए. हाँ. She doesn't like शाहिद कपूर. Okay. ऐसे अच्छे लड़कों के लिए कोई जगह नहीं उसके दिल में. Assuming ऐसा story. Sorry, Good other boys- than Urjita. Sorry. Good boys finish हाँ, last. वो- हाँ. हाँ, हो गया, whatever. हाँ. But he still doesn't give up. वो बोलता मैं US भी जाऊंगा. But then that's the same movie again. हाँ, पर in a new location. Creative director. Oh, That's a nice. double bill I want to watch. That's ये the double bill I want to watch. see that's what I'm saying. The lobster thing, the Yeah. lobster incident made sense क्योंकि Andy as a director he's thinking कि मुझे किधर घूमना है और इस हिसाब से वो मूवी आगे ले जा रहा है. Yeah, ये yeah. lobster. ये स्टोरी मैं हर जगह बताती हूँ जहाँ जहाँ एंडी होता है. इसीलिए तेरा नाम खराब हो रहा है इंडस्ट्री में. खराब हो रहा है. खराब अच्छा नहीं हो रहा लगता है, sorry, तेरा improve हो रहा है. Urjita, do you have an alternate ending? So I feel like ये मूवी जैसी सीक्वल है कि वो
और वो जबरदस्ती तुझसे प्रोड्यूस करवाएंगे. हाँ करो. तो वो मूवी में शाहिद कपूर और इसका शादी वादी होता है एंड हाँ, अक्षय विवाह, कुमार yeah. एंड अक्षय कुमार एज ही प्रोमिसेस ये अभी भी इनको स्टॉक कर रहा है Right, और ही इज हाँ. कॉन्स्टेंटली कीपिंग अ वॉच ओवर देम एंड उसके अराउंड कॉमेडी हो रहा है कि लाइक हाउ बिकॉज कैसा है कि अभी उधर भी कॉमेडी शादी करना चाहते हैं पर किसी ना किसी रीजन की वजह से उनका हो नहीं हो पा रहा है. उनका तो मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता है या ये प्रॉब्लम है. सो देन उसमें अक्षय कुमार नाउ अक्षय कुमार इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड लूप होल्स इन एवरीथिंग. ही इज ट्राइंग टू एक्टिवली स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग मैरिड. सो दैट इज द स्टोरी. एंड में शी लाइक्स अक्षय कुमार एंड देन नहीं एंड में ऐसा कुछ नहीं होता है. वो एंड अब तक सोचा नहीं है ना. वो इमीडिएटली नहीं सोचे, बाद में सोचेंगे. I don't have an alternate ending. I have an alternate beginning from this movie. Is that you scrub this movie completely from start to finish, and then you go and you make a whole new other movie because whatever you will make will be better than this one. Wow. So yeah, that would be my. खुश हो गया ना तू? हाँ, तू खुश है ना? Another ending. Comfortable हो गया ना तू? ये मूवी में अक्षय कुमार का ये भी कर सकते हैं कि ये इन माय एंडिंग कि इन माय सीक्वल कि अक्षय कुमार के हाथ वो लिक्विड लग जाता है जिससे उसका एज कम होता है. सो ही कॉन्स्टेंटली अच्छा वो तो भूल ही गया. तो अक्षय कुमार वो कॉन्स्टेंटली वो पीता रहता है जस्ट टू कीप हिमसेल्फ यंग. And then उसके बाद he keeps signing movies just to retain his youth. Personal हो रही है. It's like a documentary at this point, not a fictional movie. But remake with current Shahid would be interesting, where he's this alpha male, not the bhola bhala character. So then him and Akshay can go head to head, like fight it out for the woman. I don't know what your fantasy is, but that is Sandeep Reddy Vanga's fantasy. उसको animal और कबीर सिंह का बनाना है. Yeah. Thank you, Andy, for taking time out from your busy schedule and entertaining us. I wish I could say the same. No, it was nice, guys. Lot of fun, but जब भी मैं starting में आया था मैं तो क्या पूछा था? कि टाइगर श्रॉफ आ रहा है क्या? नहीं. Before that. कैसा है? Orange juice. हाँ. तेरे लिए कोक लाया तूने लिया नहीं. ठीक है पिला देंगे. ऐसे गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं. Anything you want to plug, Andy? Where can people follow you on social media? When are you putting out a video? Andy बोलेगा मेरे को actual में follow करो और चाय पिलाओ. But बता ना social media handle. Social media handle is the Reghu THEREGHU जो Instagram पे follow करो. अभी पता है कितना follower हो गया as we speak? 2456. I'm gonna fact check that. अच्छा. तेरे को 2000 में भी fact check करना पड़ रहा है इसका. 2546. You have more followers than me or what? Yeah, always. That was always the case. Always. No, I have more. I have 2646. 17.2K ये here, podcast के बाद देख guys. कितना कम होता है, मेरा कैसा बढ़ता है. तेरा कितना फॉलोअर है? 17.2K. Yeah, you have 2456. उर्जिता ये मिलियन वाले वीडियो वाले लोग को भी हम लोग नहीं काउंट करते हैं. अपना लीग अलग है थोड़ा. मिलियन में होने वाले हैं ना. Now you're going to become. Yeah, by the time this episode comes out, probably. Because of this episode. ये 4 episodes. Because of this episode. By the time गलत यूज. Yes, it's because of this episode, because of Andy's yeah. bump in ratings. Yeah. ये क्या था? What is this? Andy's exuberance and charisma. Exuberance. Oh my god. Wow, you have any videos online? People, if I people don't want to have see any you videos stand online, up. but I'm hoping to release a few reels. जो मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, पर Okay. तू करेगा, also मुझे hoping. पता है. मुझे तेरे घर में रोटी और रील्स चाहिए. By the way, Andy opened for Gaurav Kapoor at Bal Gandharv very recently to 1,000 people in the audience. Yeah, and then they were like, "Where's Gaurav?" yeah. Just the whole setup. Wow, Abbas. Sorry, thanks Andy for joining us. Urjita, where can people follow you on social media? You guys can subscribe to my YouTube channel @urjitawani and you guys can follow me on Instagram @urjitawani. Thank you so much. प्लग करते देख हर चीज एकदम मेथोडिक. Yeah, you can follow you can follow me on Twitter @abbasmomin and abbasmomin88 on Instagram, and I also don't have any videos out right नहीं, now. तू इतना अच्छा से प्लग किया फिर भी तेरा नंबर इतना लो क्यों है? अरे वो यही तो लोगों को सोने की परख नहीं होती. Anyway, thank you for sticking by till the very end. One last time, if you're watching us on YouTube, please subscribe to the channel, like the video, and press the bell icon. And yeah, that was our episode of Deewane Huye Pagal. We'll see you next week with a new movie and a new guest. Till then, bye bye. IVM